एक ही माशरे में ओवर टाइम भी चेंजेस आती हैं कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर वुमेन टू परफॉर्म, व्हाट राइट्स डू वुमेन हैव, व्हाट राइट्स डू मेन हैव, ऑल ऑफ दैट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। मैं एक औरत ही होती लेकिन बाकी सारी चीजें मैं चेंज कर देती। मैं किसी गरीब घराने की होती, मैं फाटा में रहती होती, मैं जो हूँ वो बलूचिस्तान में रहती होती, मैं इस्लामाबाद में ना पली भरी होती, वो अपॉर्चुनिटीज मुझे ना मिली होती जो कि मुझे मिली हैं। जो मेरी इस वक्त लाइफ आउटकम्स हैं वुड दे बी डिफरेंट इफ आई वर बोर्न इन द एग्जैक्ट सेम हाउसहोल्ड। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम होती, बट इफ आई वर नॉट अ वुमन वुड दैट हैव अफेक्टेड द आउटकम्स? इट इंटरैक्ट्स विद अदर सोशल कैटेगरीज एज वेल। के क्लास मैटर करती है, एथनिसिटी मैटर करती है, आपकी नेशनैलिटी मैटर करती है। जेंडर इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज जिनमें आपको नजरात में फर्क और जो अफेक्ट करती हैं। बाकी सारी जो है क्लास है, रेस हो गया, मजहब हो गया, आपकी लोकेशन हो गई, नेशनैलिटी हो गई, एथनिसिटी हो गई, वो सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं। जर्मनी में वही खातून बाइक चलाती, पाकिस्तान में वो क्यों नहीं चलाती? दैट्स अ कल्चरल डिस्क्रिप्शन, दैट्स समथिंग सोसाइटल, दैट हैज नथिंग टू डू विद बायोलॉजी। व्हेरेवर यू सी कि पॉवर्टी है, दोनों में है, यू सी इट्स वर्स फॉर वुमेन। एजुकेशन का मसला है, इट्स वर्स फॉर वुमेन। एक खातून जो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर हम बात करें जेंडर रोल्स की कि वो घर में बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, women are unable to even read nutrition labels on baby milk formula. Why? Because they can't even read. In Pakistan, half of the adult women's population cannot read any language. Households had higher expenditures, significantly higher expenditures spent on the education of boys as compared to girls. We know very well कि economists बहुत ध्यान से बात करते हैं जब वो बात करें किसी दो चीज़ों के causal relationship के बारे में, because you never know कि causality कहाँ run कर रही है, right? And they're very right. आपको नहीं पता कि सड़क बनाने से तरक्की हुई थी या तरक्की हो रही थी तो वहाँ पे सड़क बन गई थी। आपकी 40% ऑफ जो बच्चे हैं इस मुल्क में, यूनिसेफ 2012, दे आर स्टंटेड। उनकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड होती है। नाउ इट्स नॉट जस्ट फिजिकल ग्रोथ दैट्स स्टंटेड, दैट्स आल्सो मेंटल ग्रोथ जो कि उनकी स्टंटेड होती है, तो इट हैज डेवलपमेंट इम्प्लीकेशंस। एस्थर डुफ्लो, शी इज द नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, 2012 का मेरे ख्याल है उनका ये पेपर है, एंड शी हैज ऑफ कोर्स वर्कड अ लॉट ऑन पॉवर्टी। शी नोटेड के गरीब जो नेबरहुड्स हैं इंडिया में, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे the mortality rate of girl children is double that of boys. Assalamu alaikum everyone. I am Zile Huma, student of MPhil Development Studies Program 2021. On behalf of my group Javed Ali and Junaid Iqbal, I will welcome you all. Especially I feel honored to welcome our worthy guest, Ms. Sundus Saleemi, and respected teachers and students. I hope we will gain in-depth insight and information from this valuable gathering. Gender inequality or gender discrimination refers to unfair right between male and female based on different gender roles, which leads to unequal treatment in life. Gender inequality is obviously an urgent problem in the world. Let's examine what gender and development discourse has to offer to avert this situation. Let's start the presentation. Please come. So, the word gender confuses many of us and we think that this word is only referring to women and girls, which is wrong. However, gender has been defined as role that we as society assign to men and women, boys and girls. The assignment of roles, however, differs from society to society. So we can say that economic, social, political, and cultural attributes and opportunities associated with being male or female is called gender. So what is gender and development discourse? First of all, we need to know that gender and development discourse seeks to analyze the causes of gender inequality within the context of relations between men and women and social structures, and it basically challenged stereotype division of labor and system institutions that bring about gender disparity. Therefore, the gender and development approach emphasizes empowerment of women who are economically and socially disadvantaged, while paying due consideration to the role of men in eliminating gender inequality. So we can say that this is more of a feminist approach towards development, a holistic approach which ensures empowerment, equitable, sustainable, free from violence world. And the gender equality lies in the center as fundamental value. And this approach says that women are active agents of development and not just passive recipient of the development.
So let's have a look at the global gender inequalities which are prevailing globally. So you can see that 1 in 5 girls is married before turning 18. 1 in 4 girl is out of secondary school. So these are some of the figures which shows the very disappointing and bleak picture. Let's come to home, Pakistan. Pakistan is the world's 5th most populous country. In spite of adopting a number of international commitments to gender equality and women's human rights, and national commitments like National Policy for Development and Empowerment of Women, Protection Against Harassment of Women at Workplace Act, etc., many policies. Still, Pakistan ranks among the worst countries in gender equality. As you can see that we are standing in a row with Iraq, Yemen, and Afghanistan. And we are at 153rd out of 156 countries on gender parity index, which is showing a really disappointing and dark picture. These are some of the sectors which are showing extremely gender parities for women. Like you can see that women labor participation is only 22%. There are only 4% women on managerial positions in Pakistan. Pakistani women income is 16% of men income. Literate women are only 46%. And women have no access to justice, ownership of land, and non-financial assets or inheritance rights. So if we will not address gender equalities urgently, you will face gender discrimination, which will further leads to poverty and vulnerability in society as a whole. And you know that poverty is one of the biggest social problem of Pakistan. Further, it will lead to violence against men, women and girls, which is most prevalent nowadays, you can see. And this is altogether a huge loss of human potential. So in gender and development discourse, we ensure gender equality through gender mainstreaming and gender integration. Basically, gender mainstreaming is a process in which we address gender disparities and gaps in such areas as the division of labor between men and women, access to and control over resources, access to services, information and opportunities, and distribution of power and decision making. So in the end, I would like to say that through attention to gender issues, our development assistance program will be more equitable, effective, and sustainable. Because if development is not engendered, it is endangered. On this note, I am privileged to invite Dr. Sundus Saleemi to the stage to shed more light on the topic. And let me introduce her. Dr. Sundus Saleemi is the senior researcher at the Center of Development Research at University of Bonn, Germany. Dr. Saleemi defended her thesis, Empowerment of Women and Girls in Rural Pakistan, Migration, Decision-Making and Consciousness in September 2020. She received her doctorate from the University of Bonn. She did her master's and MPhil in economics from PIDE University. Previously, she was a staff economist at PIDE. Let's welcome ma'am on the stage. Thank you very much for that introduction and my rather youthful picture over there. Now, as you can see, I'm a little different now. Thank you. I am very honored and very pleased to be here. And I'm also very anxious. And the reason for that anxiety is that this is like coming home, and presenting in front of my friends, my peers, and my teachers is, overwhelming. It's especially overwhelming because these are people who have really seen me grow, learn, evolve, and I've come back to PIDE after, I think, 5 years now, and the changes, the things that I've learned, things that now I am offering over here, that this is the first time that I'm presenting those parts of self that my teachers, my peers, etc. Have not seen so far. So yes, this is both an honor and a pleasure. Thank you. I am going to talk a little bit about the field, gender and development, and I am also going to talk a little bit about my own work, which was my doctoral dissertation. Zille has already introduced me. So my background is economics,
but I was more interested in issues related to development. That is why I undertook my doctoral research at the Center for Development Research, which takes sort of an interdisciplinary approach towards development. So what I'm talking about is not going to be mainstream economics, but we gather knowledge from other social sciences as well. So which puts us in a very tricky situation that you're a little afraid to present it in front of economists because they're like, no, this is not economics, and then you're also afraid of presenting it in front of anthropologists. You're like, no, this is too basic. So, but let's keep it interactive. I'm presenting what I've learned, but I'm also willing to learn from all of you, and I will also keep it bilingual. मुझे अपनी अंग्रेजी जो है वो यहाँ पे नहीं झाड़नी है. All right. I will begin by asking what is gender before talking about gender and development. And Zile has already sort of introduced the concept. So if anyone in the audience can repeat that or submit another definition of the concept. Gender kya hai? What is gender? Yes. Gender is a social construct. What does that mean? Iska kya matlab hai? It means that we have sort of ascribed meaning to it. This is not basically what naturally is. Okay. This is the sex, the categories, the male and the female, but the meanings that we associate with those categories of humans, males and females, is basically what we call the social construct, gender. Very good, very good. Anyone else? किसी और की कोई सब्मिशन हो या इस बात पे कोई एतराज़ हो? जी. I think first of all we need to realize we are all souls. ठीक है, सोल हम पहले हैं, उसके बाद हमारे ऊपर एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जिसके ट्रेट्स होते हैं और वो फिर जेंडर डेवलप होता है और जेंडर में सोसाइटी डेवलप करती है. हम ठीक है, हमारे अंदर दोनों जेंडर के ट्रेट्स होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी. अब उनमें से कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट होता है, दैट डिस्क्राइब्स आवर जेंडर. Okay, that's one way of looking at it. What is your name? नहीं, जिन्होंने जवाब दिया था. Aksa. What Aksa said and what is your name? Vakas and Aksa said, that is sort of what we're talking about over here. हम यही बात कर रहे हैं कि जेंडर है क्या चीज़, या? और एक वकास ने बात की कि एक तो हमारी फिजिकल फॉर्म है ना, फिजिकल फॉर्म या नेचुरल फॉर्म या बायोलॉजिकल फॉर्म है. That is the idea, not the idea, that is the fact of being either a male body or a female body, right? Gender describes कि what meanings we ascribe to those bodies. उसका क्या मतलब है कि अब एक बॉडी तो है, लेकिन मुआशरे में उस बॉडी से रिलेटेड क्या कुछ आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, और वो आइडियाज़ का क्या मतलब है कि what roles are these bodies going to perform, what rights do these bodies are going to have, what responsibilities these bodies are going to have, and why do we want to make this distinction between the physical form and these roles or the cultural ascriptions? The reason that we want to differentiate is that when we're talking about the position of women, when we're talking about the position of men, when we're talking about all of this, is not a biological or a natural difference, but rather this is all a cultural phenomena. और हम ये क्यों इतने वसूख से कह रहे हैं, हमसे मुराद है सोशल साइंटिस्ट, हम इतने वसूख से क्यों कहते हैं कि ये कल्चरल फिनोमेना है? क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं कि माशरे, मुख्तलिफ जो माशरे होते हैं उसमें आदमी और औरतों के जो रोल्स हैं माशरे में वो फ़र्क होते हैं, एंड दैट दे हैव ऑल्सो हिस्टोरिकली इवॉल्व्ड. लाइक एक ही माशरे में ओवर टाइम भी चेंजेस आती हैं कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर वुमेन टू परफॉर्म, फॉर वुमेन टू डू, व्हाट राइट्स डू वुमेन हैव, व्हाट राइट्स डू मेन हैव. ऑल ऑफ दैट हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम. सो दैट लीड्स अस टू हाइपोथेसाइज एंड टू सजेस्ट कि हाँ भाई ये चीज़ है जो कि एक कल्चरल इंस्क्रिप्शन है जो कि माशरा डिसाइड करता है, और ये मुख्तलिफ माशरों में जो है वो फ़र्क भी होती है और एक ही माशरे में उसके अंदर जो है वो तब्दीली भी आती है. राइट. फिर उसके बाद we're going to talk about development, and then what is the implication of gender equality or inequality in development. उसके बाद I'm also going to talk about the evolution of
the field itself, gender or development, and then I will talk about my own work. The other concept after talking about gender is what is important is to know your positionality. अब positionality क्या है? Can I please have a pointer? Because मैं उधर चली जाती हूँ और मेरी presentation पीछे रह जाती है. नहीं? Okay, sorry. Yeah, please, can you do that? Thank you. Yes. All right. अच्छा, the other concept before starting my presentation. General हमने जो है वो ऐसा कर दिया कि क्या है? अच्छा, the other concept that we need to get out of the way before I start my presentation is positionality, and that positionality की जब मैं बात करूँगी, positionality की बात इसलिए जरूरी है कि जो presentation हो रही होगी आपको अंदाजा होगा कि भाई ये क्यों जरूरी है as a researcher to know their positionality and also to lay that bare कि मैं बता भी दूँ कि भाई मेरी positionality क्या है. और इस positionality को बात करने के बाद I will also tell you कि those के जो related concepts हैं वो क्या है. May I just take this up. So I'm a woman. I'm from South Asia. पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान में I recognize this कि एक upper middle class educated family से मेरा ताल्लुक है, right? मुसलमान सुन्नी घराने से पंजाबी हूँ, सारी जिंदगी मैंने जो है वो इस्लामाबाद में गुजारी, right? At this point in my life, I am a senior researcher. Thank you so much. I'm a senior researcher. मैं जर्मनी में जो हूँ वो पोस्ट ऑफ रिसर्च कर रही हूँ. मैंने अपना मास्टर्स किया, एमफिल किया, PIDE में मैंने अपनी जो है वो नौकरी. As a thought experiment में अगर आपसे ये पूछूं कि अगर इन सारी चीज़ों में से मैं एक औरत ही होती लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैं चेंज कर देती, मैं किसी गरीब घराने की होती, मैं फाटा में रहती होती, मैं जो हूँ वो बलूचिस्तान में रहती होती, मैं इस्लामाबाद में ना पली भरी होती, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ना मिली होती जो कि मुझे मिली हैं, जो मेरी इस वक्त लाइफ आउटकम्स हैं, वुड दे बी डिफरेंट? I mean we're not saying कि वो बेहतर होते, क्या होते, क्या ना होते. कहने का मकसद ये कि वो फ़र्क होते. Now think about your own lives. जिधर आप हैं, you have your own positionality. जो आदमी है, जो औरत है, जहाँ से उसका ताल्लुक है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उसकी क्या एथनिसिटी है, all of that has shaped like your life outcomes. और दूसरी बात, अगर मैं बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रखूं, if I were born in the exact same household, exactly, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती, but if I were not a woman, would that have affected the outcomes? And then now think about your own positionality. Now think about your own lives. If you were born in the exact same household that you are in right now, however, you were of the opposite gender, do you think your life would have been different? How so? Yeah, sure. मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, तो अगर मैं इंडियन यूनिवर्सिटी करता मैं अपनी सिस्टर को ले लेता हूँ कि मेरी सिस्टर हैं वो अनएजुकेटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ पे परमिशन नहीं है और वो सिर्फ घर के चार दीवारी में रह के वहीं के, और कोई भी चीज़ वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकती, कुछ भी. मेल डोमिनेंस ये जैसे फादर और बड़े भाई वो और घराना और जो ख़ानदान है, जो डायरेक्शन जो उनको परमिशन वो देंगे वो उसी पे चल सकती है, और उसके अपने विशेष, उसके अपने ख्वाहिशात कुछ भी नथिंग है, इस तरह की कोई भी चीज़. Thank you very much. Thank you for that submission. Anyone else has a different opinion on that or another experience? कोई ये कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से? अगर आप ये समझते हैं तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई मतलब मैं it's an exchange. I'm not saying कि ऐसा ही है, but मुझे ये लगता है, और काफ़ी लोग अगर ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें तो all of these factors are very important, and gender as a social category is also very important when it comes to like shaping your outcomes, your life outcomes. अच्छा, अब इस सारे से मैं काम नहीं कर रहा.
हाँ इसमें जी सर। इसमें मैं एक रिविजन सजेस्ट कर सकती हूँ यस जो आपके मैम प्लीज, questions हैं. ऑफ कोर्स. I keep my sex constant, Yeah. but change all other factors. That is a very good point, ma'am. But it's also related. The thing, yes, that's a question. If I could just a little bit explain that. You're very right कि जो जेंडर जब कंस्ट्रक्ट होता है वो हमारा सेक्स के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट होता है. हाउएवर जब सोशली हम उसको देखते हैं तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई सेक्स दैट आई वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटीज दैट आई वॉज गिवन. इट वॉज बिकॉज ऑफ जेंडर एंड दैट इज ना एक सेकेंड, सिर्फ बर्थ की बात करें. अगर हाँ मतलब जो आपकी फिजियोलॉजिकल है that sex, that's not gender. If you just replace woman with man and keep everything else constant, everything will change. Yeah, all right. So I would say I keep constant, but change all of the factors. All right. Thank you. Exactly. That is why I've put both questions. If I keep my gender constant and change all the other factors, things would be different. मैं जर्मनी में पैदा हुई होती, मैं गरीब होती, मैं पाकिस्तान में ना होती. Question already है ना, तो And उसमें भी I would say I keep all of the Yeah, yeah. factors constant and change my sex. And exactly, if And I that's keep the all interaction between all these factors. yeah. So either I'm changing this and keeping all of this constant, Yeah. or I'm keeping all of this constant and just changing this. What if we change everything? So the outcomes would be Different. The outcomes would be different if I change everything. no, but a person belonging, a male belonging to FATA would be equally deprived. Equally or not, but you're very right that he would be deprived as well, and that is exactly what we're saying, that gender is a social category, yes. However, it interacts with other social categories as well. कि क्लास मैटर करती है, एथनिसिटी मैटर करती है, आपकी नेशनैलिटी मैटर करती है. जैसे सर ने कहा कि मैं एज अ वुमन जो हूँ इस्लामाबाद में सारे प्रिविलेज के साथ हूँ, अपनी एक एक रिलेटिवली एजुकेटेड हाउस होल्ड के साथ. हाउएवर दैट इज़ जस्ट वन ऑफ द सोशल कैटेगरीज, राइट. देयर आर अदर सोशल कैटेगरीज एज वेल जो कि सेलियंट होती हैं इन शेपिंग द लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू हैव. The other इस पोजिशनैलिटी को बताने का और इस थॉट एक्सपेरिमेंट करने का दूसरा पॉइंट जो है वो मतलब मकसद ये था टू कन्वे कि जब हम वुमेन की बात करते हैं इट्स नॉट अ होमोजेनस कैटेगरी. उसका क्या मतलब है? What does that mean? कि it's not a homogeneous category. जब मैं एक औरत की बात कर रही हूँ तो मैं इस तरह से बात नहीं कर सकती as if तमाम की तमाम औरतें जो हैं वो सेम हैं. Intersectionality matters. Exactly, and that is exactly what that means. It means कि it is intersectional. Intersectional का क्या मतलब है कि all of these different social categories interact, all of these social categories are important, and sometimes, just a minute, sometimes जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी जब खास तौर पे रिसर्च कर सकते हैं तो we need to be very well aware कि which is the social category that we are analyzing, and gender is just one of them. Yeah, you had a submission. पर ये inequality तो अगर हम जेंडर को इग्नोर कर दें तब भी एग्जिस्ट करती है ह्यूमन यही बात है. यही तो सारी बात है, यही तो बात हो रही है कि जेंडर इज वन ऑफ द सोशल कैटेगरीज. जेंडर इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज जिनमें आपको नज़र आते हैं फ़र्क और जो अफेक्ट करती हैं. बाकी सारी जो है क्लास है, रेस हो गया, मज़हब हो गया, आपकी लोकेशन हो गई, नेशनैलिटी हो गई, एथनिसिटी हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं. एंड दिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी. या ऑलराइट. Then we also know that women is not a homogeneous category, there are differences. And the other thing which is also very important as for a social scientist, that कि जब मुझे अपनी positionality पता लग गई, I know I have lived as a woman in this country belonging to a certain class for over 30 years now, right? And that interaction with society, मेरा मुआशरे के साथ जब interaction होता है, मेरी मुआशरे के बारे में एक राय बनती है ना. और वो राय जब मेरी बनती है मुआशरे के बारे में कि लोग कैसे होते हैं, मुआशरा कैसा होता है, चीज़ें किस तरह से होती हैं, वो राय जो है वो मेरी रिसर्च के अंदर भी आती है. इसीलिए एज अ सोशल साइंस रिसर्चर यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि भाई मैं अगर पाकिस्तानी मुआशरे को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ
मेरा analysis is going to be colored by the perceptions that I have, the opinions that I have about that society because of my experiences with it. So if you have lived as a man in this society, perhaps your perceptions are going to be very different from people who have lived as women in this society. And it is not कि हमारे biases नहीं होते, मेरे biases भी हैं और आपके biases भी होते हैं. जब हम एज अ रिसर्चर अपनी पोजिशनैलिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम अपने बायसेस को थोड़ा सा जो है वो रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं. एंड बायसेस जो है वो दे आर वेरी स्टिकी, हमारे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी sticky as well. So if you're a development researcher, if you're any if you're a social science researcher and economist too, उनको ये बात जो है बार बार अपने आप से पूछनी चाहिए कि कहीं ये मेरा कोई इंटरनलाइज बायस तो नहीं है. और इस प्रेजेंटेशन के दौरान भी जो भी हम बातें कर रहे होंगे, let's continuously think about our own positionalities when we talk about this. Alright, we've already talked about what is gender and what is sex. सेक्स का मतलब है द बायोलॉजिकल ट्रेट्स जो होते हैं मेल और फीमेल होने के, और जेंडर का मतलब है कि वो बाकी सारी चीजें हम जो उसके अराउंड बिल्ड कर लेते हैं. एक खातून बाइसिकल नहीं चला सकती, दैट इज नथिंग टू डू विद द बायोलॉजिकल बॉडी. जर्मनी में वही खातून बाइक चलाती है, पाकिस्तान में वो क्यों नहीं चलाती? दैट्स अ कल्चरल डिस्क्रिप्शन, दैट्स समथिंग सोसाइटल, दैट हैज नथिंग टू डू विद बायोलॉजी, राइट? और इसी तरह वो राइट्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे के सारे होते हैं. I'm going to try and link that to development. What is development? Yeah, please. Mobility of opportunities. Okay, that's one way of looking. Yes, one way of looking at it. तरक्की की बात करते हैं तो तरक्की क्या है? Better standard of living. जी. Progress towards betterment in terms of very good economic growth, social, political, yes, livelihoods, yeah, all of these things which मतलब जो मैंने लिखी है जो आते हैं poverty को reduce करना, very basic. I mean all of you are very right because development is a huge concept. लेकिन जब हम उसको basic तरीके से देखते हैं तो हम कहते हैं there should be reductions in poverty, incomes आपकी enhance हो, well-being enhance हो, education, health, and then somebody said कि structural transformation हो, वो सारी की सारी चीज़ हो. Now think about poverty for example. पावर्टी की अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं, एंड दिस वाज नोटिस, रीड दिस वाज नोटिस. थैंक यू. एस्थर डुफ्लो, शी इज़ द नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट. 2012 का मेरा ख्याल है उनका ये पेपर है, एंड शी हैज़ ऑफ कोर्स वर्कड अ लॉट ऑन पावर्टी. शी नोटेड कि गरीब जो नेबरहुड्स हैं इंडिया में, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे the mortality rate of girl children is double that of boys. कि जहाँ पे we know that one of the unfortunate features of poverty is that children जो कि newborn children होते हैं या children under the age of 5, they die of easily preventable diseases, right? That's an unfortunate feature of poverty, right? However, even within that, you see it affects, it appears, now this is, I mean we're not drawing any conclusions, I'm just saying कि ये एक observation है. It appears that girls are doubly affected by this, right? So you may want to think okay, perhaps there is a connection between poverty and gender. Think about hunger and food insecurity. Again this observation was made कि जहाँ पे कहत साली होती है, और ये भी इंडिया के ऊपर ही रिसर्च थी, कि जब कहत साली होती है तो जो एक्सेस मोर्टेलिटी का क्या मतलब है कि वो लोग जो कि मतलब भूख से, बच्चे जो हैं वो भूख या रिलेटेड चीज़ों की वजह से फौत हो जाते हैं, वो जो है that's higher for girls, right? Inequality आपको स्टेटिस्टिक्स में नज़र आती है, we're going to talk about that. और दुनिया में कहीं भी इस वक्त in terms of economic participation, political participation, Finland, the most gender equal countries of the world, आपको नज़र नहीं आता कि men and women are at par. In terms of education, especially in South Asia, in Sub-Saharan Africa, and also in Pakistan, I'm going to talk about Pakistan in a little while, you see that those gaps exist. Now again, it's not कि
It's not just a problem of girls. However, there are gaps. Wherever you see कि poverty है, दोनों में है, you see it's worse for women. In education का मसला है, दोनों में है, it's worse for women. उसके बाद health. You see health gaps जो हैं, that's manifested in this phenomena which is called missing women. What is this? Anyone knows what missing women means? The women who are underrepresented, okay, but that's one way of looking at it, but that's not the meaning that I'm looking at over here. Missing women. Yes, sir. शायद जो डॉक्टर विमेन डॉक्टर वो डॉक्टर बन जाती हैं, लेकिन वो फिर हॉस्पिटल या क्लिनिक में नहीं शो अप करती हैं और शादियां करके घर बैठती हैं. Okay, that's a very good point as well, but again, that's not what I'm referring to over here. What I'm referring to over here is this phenomena that Amartya Sen highlighted. Sen, again a Nobel Prize winning economist, जिसको काफ़ी दिहाइयाँ पहले जो है वो Nobel Prize मिला था, उसने 94 में या 92 में, I'm not sure, 94 और 92 में उसने एक पेपर लिखा जिसका जो कि बहुत ही मशहूर हुआ, जिसको बोला मिसिंग वुमेन. मिसिंग वुमेन का क्या मतलब है कि अगर देखा जाए बर्थ रेशोज़ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एट्सेट्रा में बॉयज़ एंड गर्ल्स के, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम, यू नो, एज मेनी गर्ल चिल्ड्रन आर बोर्न as boys. However, जो पॉपुलेशन में आपको सेक्स रेशियोज़ नज़र आते हैं, आज भी पाकिस्तान की 51% आबादी जो है वो मर्द है और 49% औरतें हैं. जो रेशियोज़ आपको पॉपुलेशन में नज़र आते हैं वो स्क्यूड हैं. देयर आर मोर बॉयज़, देयर आर मोर मैन. वेयर आर दीज वुमेन गोइंग? वो कहाँ हैं और वो मर रही हैं. He estimated, at that time he estimated कि अगर हम देखें कि एक्सेस मोर्टालिटी होती है हेल्थ की नेग्लिजेंस की वजह से, न्यूट्रिशन की नेग्लिजेंस की वजह से, औरतों का इजीली प्रिवेंटेबल डिजीज़ की वजह से मर जाना, उनकी एक्सेस मोर्टालिटी को अगर एड अप किया जाए तो मिलियंस ऑफ वुमेन आर मिसिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन just because they have died. That's a huge health gap. Now this paper which became like very famous, this number, ये numbers आना शुरू हो गए, भाई 60 मिलियन औरतें मिसिंग हैं, इतने मिलियन औरतें मिसिंग हैं, राइट? इसका मतलब है कि वो मर गई हैं क्योंकि उनको जो है वो खाने को नहीं मिला, उनको किसी ने अस्पताल लेके नहीं गया. This was revised again somewhere in the aughts, और at this point again Esther Duflo कहती है कि 6 million women annually missing होते हैं. They die either in childbirth, they die of easily preventable diseases in early childhood, and because of sex selective abortions in India, China and all of these countries. So that's a huge health gap, right? Then you see low rates of participation of women, etc., all of that. Now I've given you all of this information, right? And this is from research जो अच्छी है, मतलब जिसको फिर भी अच्छा समझा जाता है, Nobel Prize winning economists हैं, all of that. इस सब का आप क्या मतलब है? Like I've given you these facts. What does this mean for development? Role of female in development. Elaborate, please. The role of female development. That's thank you. That's an excellent point. Anyone else has a point? Yes, G, please. We have set the background that this is the situation of women in our society. Basically, what is the background and now for their functionality, basically the structure of the society. So now, basically, we have to figure out with all these references and background knowledge that how can we cut down on the problems they are already facing. We have to suggest maybe a solution for the problems they are facing due to all these things, like you mentioned the maternity deaths and the poverty impacts the world and all these infrastructural issues as well. Okay, very good. Thank you very much. Thank you. That's an excellent point. Anyone else has a point? Yes, G, please.
develop without committing. Alright, thank you very much. Thank you. आपने कहा कि gender equality as a component of development. You cannot talk about development without having gender equality. और आपने ये कहा कि now we should think about the solutions. Very good. Alright, but we can even go like अच्छा हम ये कह सकते हैं भाई क्यों जरूरी है? नहीं है तो बस सही है, बाकी सारे मसाइल भी तो है ना, इसको क्यों लेके हम बैठ जाए? मसला इससे भी अगर डीपर है, और मसला ये है कि there probably is even a relationship between these two. Okay, and we know very well कि economists बहुत ध्यान से बात करते हैं जब वो बात करें किसी दो चीज़ों के causal relationship के बारे में, because you never know कि causality कहाँ रन कर रही है, right? लेकिन बहुत and they're very right, आपको नहीं पता कि सड़क बनाने से तरक्की हुई थी या तरक्की हो रही थी तो वहाँ पे सड़क बन गई थी. हमें ये मतलब ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इस तरह के क्लेम्स करते हैं. लेकिन अच्छे इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि अच्छा इसका कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, और अपेरेंटली यस है, बट द रिलेशनशिप इज़ बाई डायरेक्शनल. सो बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि एक तो ऑब्जर्व किया जाता है कि जूं आपकी इनकम्स इम्प्रूव होती हैं, जूं आपकी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वहाँ पे आपको नज़र आता है कि इनक्वालिटी जो है, ये जो गैप्स हैं ये थोड़े जो हैं वो फिल होना शुरू हो जाते हैं. हाउएवर ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर इनक्वालिटी रिड्यूस होती है तो आपके आउटकम्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं. एंड दैट इज़ वाई कि मतलब दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई कि जब ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि ये मसाइल हैं, अभी तो हम दुनिया के लेवल की बात कर रहे हैं ना, कि तो अगर हम तरक्की की बात करते हैं तो शायद हमें इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपके जो हैं वो गैप्स कितने हैं ख़वातीन और मर्दों के दरमियान में. उसकी एक बहुत जो मतलब सादा एग्ज़ाम्पल है जो कि बार बार ऑब्ज़र्व किया गया है रिसर्च में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में, मुख्तलिफ़ डेटा सेट्स के साथ, कि सिंपल कि जहाँ पे वुमेन मतलब वो हाउस होल्ड जिसमें ख़वातीन थोड़ी ज़्यादा एजुकेटेड होती हैं वहाँ पे आपको बेटर आउटकम्स मिलते हैं. ये सारे आउटकम्स जो होते हैं मतलब बच्चों की सेहत, बच्चों की तालीम, उनके मोर्टेलिटी रेट्स एक्सेट्रा होते हैं. ऑल ऑफ दीज आर डेवलपमेंट आउटकम्स, राइट? हमने इम्प्रूव करना है इन सारी चीज़ों को और वो वहीं से इम्प्रूव हो रहे हैं ना, हाउस होल्ड लेवल से. आप देखते हैं बार बार कि जहाँ पे तालीम ज़्यादा है वहाँ पे यू सी दीज आउटकम्स improve, and this is like solid robust research. I'm not saying कि सिर्फ जो है वो cross sectional आपने comparisons कर लिए. This is long term panel data analysis, all of that जो कहते हैं. evidence ने ये भी कहा कि assets incomes जब औरतों के improve होते हैं तो भी you see these outcomes. इसकी छोटी छोटी जो मतलब एग्जांपल्स हैं when you start thinking about it, कि ये है कि एक खातून जो पढ़ी लिखी नहीं है और उनका मतलब घर में उन्होंने, अगर हम बात करें जेंडर रोल्स की, कि वो घर में बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, women are unable to even read nutrition labels on baby milk formula. उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने कितना फार्मूला यूज़ करना और कितना पानी इस्तेमाल करना है. Why? Because they can't even read. And in Pakistan, half of the adult women's population cannot read any language. So they wouldn't know कि बच्चे के फॉर्मूला में कितना दूध डालना है और कितना दूध जो है पानी डालना है. Now this is not some छोटी सी बात. The problem is, the big huge problem is that early childhood आपकी जो development होती है, आपकी physical और cognitive development होती है, that has long term implications. And when we are talking about populations, big populations की आप बात कर रहे हैं, तो that has development implications. That has development implications in a sense कि आपकी school में progress कितनी है, आपकी university में progress कितनी है, आपकी वो सारी चीज़ों जो हैं वो compound कर जाती हैं just because आपको early childhood में जो आपकी 40% of जो बच्चे हैं इस मुल्क में, UNICEF 2012, they are stunted. उनकी growth जो है वो stunted होती है. Now it's not just physical growth that's stunted, that's also mental growth जो कि उनकी stunted होती है. तो it has development implications. अच्छा, I did want to talk about मतलब what are the contestations within the field, but before but I mean I've already taken a lot of time. So before that I'm going to talk about, अच्छा अब ये सारी information तो हमें पता लग गई कि भाई ये दुनिया में हमें नज़र आया. What I did in my own research was to check कि अच्छा ऐसा होता है
पाकिस्तान में भी या नहीं होता, कि पाकिस्तान में एक तो ये कि आई वांटेड टू लुक एट इन माय रिसर्च आई लुक्ड एट व्हाट आर द गैप्स, कि गैप्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, विच वाज सिंपल, आई जस्ट हैड टू कलेक्ट सम डेटा एंड लुक एट कि क्या स्टेटिस्टिक्स है। और उसके बाद व्हाट आई वांटेड टू डू वाज आई वांटेड टू सी कि अच्छा if we have more empowerment of women, and we're going to talk about what I mean by empowerment, outcomes क्या हैं बच्चों के, और दी पर्टिकुलर आउटकम जिसमें मुझे ज़्यादा दिलचस्पी थी वो थी तालीम, और वो भी ख़ास करके बच्चियों की तालीम, राइट। और उसमें जो है मैंने किया क्या, फ्रेमवर्क वुमेन्स एम्पावरमेंट का लिया। अब एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, अगेन मेरे पास क्योंकि कम टाइम है तो I'm going to be a little quick with this। एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि you have to look at many factors। शुरू में भी हमने कहा कि it's not just कि मेरे पास इनकम हो, मेरे पास साथ में थोड़ा सा शऊर भी हो, और साथ में मेरे पास कोई अचीवमेंट्स भी हों। ऑल ऑफ दैट अगर उसको मिल के हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एम्पावरमेंट है। और ये एक फेमस जो है वो जेंडर इकोनॉमिस्ट है नाइला कबीर, उनका फ्रेमवर्क है जो कि मैंने यूज़ किया कि यू नीड टू हैव रिसोर्सेज, एजेंसी, अचीवमेंट्स टुगेदर दैट लीड्स टू मीनिंगफुल चॉइसेस। मीनिंगफुल चॉइसेस का क्या मतलब है कि यू आर एबल टू लिव योर लाइफ द वे दैट यू वांट टू लिव, राइट। जब आपके पास इनकम होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तभी आप कर सकते हो। मैंने देखना था कि how does that relate to gender equality। now होता क्या है, अच्छा पाकिस्तान के फिगर्स ज़िले ने आपको पहले ही बता दिए थे, तो आई एम नॉट गोना रिपीट ऑल ऑफ दीज, राइट। कि येस आई ऑब्जर्व्ड गैप्स ऑब्जर्व करते हैं आप लिटरेसी रेट्स में भी, इनरोलमेंट रेट्स में भी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स में भी, एंड हेयर्स द इंटरसेक्शनैलिटी, दीज गैप्स आर वाइडर इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो मुझे रूरल एरियाज में दिलचस्पी थी और मैंने जो है वो डेटा लिया, पैनल डेटा। पैनल डेटा का क्या मतलब है, स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स नहीं इफ्प्री का, लेकिन पैनल मैं इस बात पे ज़रा इसलिए ज़्यादा वो कर रही हूँ, एम्फसाइज कर रही हूँ ताकि मेरी जो रिसर्च मेथड है वो जरा ज्यादा इम्प्रेसिव लगे। पैनल डेटा का क्या मतलब है, प्लीज यू आर ऑल एट PIDE, समवन शुड नो व्हाट पैनल डेटा इज। Thank you very much. It's always a woman to the rescue. Thank you. Yes. कि मतलब ये है कि you have अच्छा बड़ा मसला अगेन कि बड़ा मसला ये होता है कि इफ़ यू आर डूइंग क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजंस ना, कि एक घर को मैं दूसरे घर से कंपेयर करूँ और मैं देखूँ कि यहाँ पे ख़वातीन का क्या किरदार है और यहाँ पे ख़वातीन का क्या किरदार है, उनके बच्चों के आउटकम्स में क्या फ़र्क है, तो ये एक मैं गलत कंक्लूजन पे पहुँच सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उन घरों में और भी बहुत से फ़र्क होंगे, राइट। क्योंकि हो सकता है कि ख़वातीन के किरदार की वजह से बच्चे बेहतर ना हों, बल्कि किसी और वजह से हों, लेकिन मैंने जो है वो एक गलत कंपैरिजन कर दिया। पैनल डेटा क्या होता है कि आई लुक एट द सेम unit of analysis, it can be a firm, it can be an individual, it can be a household, but at multiple times. That what it allows me to do is that वो उन्हीं यूनिट्स के अंदर जो है वो डिफरेंसेस जो ओवर टाइम आते हैं उन्हीं को मैं देखती हूँ, और फिर उसके बाद आई कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स इन अ सेंस कि मैं कह सकती हूँ कि ये तब्दीली इसकी वजह से आई है। तो मैंने पैनल डेटा लिया जो कि इफ्प्री का था, रूरल हाउस होल्ड्स का 3 प्रोविंसेस में, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं उन हाउस होल्ड्स में दोबारा चली गई खुद। मैंने कहा अच्छा मुझे दोबारा इनका डेटा जो है वो लेना है। उससे क्या होता है कि यू गेट इवन मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। एंड उसके जो है वो मेरा अपना जो डेटा सेट था दैट वाज स्मॉलर। ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा जो है वो डेटा गैदर नहीं कर सकती थी, और बाकी मैंने डेटा सोर्सेज भी यूज़ किए। दीज आर माई रिसर्च एरियाज़। और मैंने देखना क्या था, मैंने देखना ये था कि आई एम लुकिंग एट एम्पावरमेंट, राइट। और एम्पावरमेंट के बहुत से जो हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से एक यस जी मैंने 17 में जाके जो है वो उसका जो सबसेट था उनको रिविजिट किया था। तो 300 हाउस होल्ड्स थे, तो डेटा सेट इज़ 2000, लेकिन मेरा एक सबसेट था 4 लेकिन अनबैलेंस्ड। या थैंक यू। अच्छा, और मैंने देखना क्या था, मैंने देखना ये था कि one of the ways in which we say कि women are empowered is that when they have more decision making roles। मैं देख रही थी कि घर में अगर
women are themselves deciding कि कितना खर्च करना है बच्चों की तालीम के ऊपर, does that have implications for girls' education, and especially कि जो inequality ऑब्जर्व की जाती है. मैंने ये जब सारे के सारा डेटा देखा इन 2000 घरानों का, तो मैंने देखा कि गर्ल्स आर लेस लाइकली टू बी सेंट टू स्कूल. येस, बॉयज़ भी स्कूल नहीं जाते, लेकिन गर्ल्स तो और भी कम जाती हैं. प्लस जब जाते हैं girls or boys school, तो households had higher expenditures, significantly higher expenditures spent on the education of boys as compared to girls. तो it was almost half. कि अगर annual 2000 रुपए खर्च हो रहे हैं ना बच्चे की तालीम पे, बच्ची की तालीम पे शायद 1000 खर्च हो रहा हो, और वो that means कि quality उनको boys are more likely to be sent to a private school, boys are more likely to be sent, you know, to receive more on their stationery, books, etc. all of that उनको ज़्यादा मिलता है. और मैं ये देखना चाह रही थी कि वो हाउस होल्ड्स जहाँ पे अब ख़वातीन आर मोर एम्पावर्ड इन द सेंस ऑफ द वर्ड दैट आई एम टेकिंग, डज दैट ट्रांसलेट इनटू मोर gender equal outcomes, and does that translate into improved outcomes for girls. और पैनल डेटा से मुझे फ़ायदा क्या हुआ? मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं वही हाउस होल्ड देख रही हूँ पहले where the decision making was both with men and women, and then over time something changed. One of the things that I observed was कि when men migrated, जब men migrated for work, the woman was left behind. Now she had a little bit more authority within the household कि कितना spend करे और कितना ना करे, and she also had some resources to herself कि she was also receiving probably some remittances. And then I wanted to see whether or not that translates into higher expenditures on girls, and it does. Now मेरे priors भी ये थे कि probably इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा because और भी चीज़ें matter करती हैं, especially you know internalized आपकी जो होते हैं patriarchal attitudes, के patriarchal attitudes खाली मर्दों के नहीं होते, औरतों के भी होते. However, I saw कि significantly ये फ़र्क होता है, and I did not look at the overall expenditures, I looked at the shares that told me कि फ़र्क कितना है girls और boys में. और उसके बाद yeah, these are the numbers that I had, and I mean these were my conclusions of just one of the papers. I had 3. This one is going to be published soon in World Development Perspectives. और उसमें जो है I saw कि women's participation in decisions increased their shares in household expenditures. I interacted it with a variable for consciousness. It also had a positive impact, and girls are more likely to be sent to school if you know women are in these decision-making roles. अब now connecting it again to the ideas जो हम पहले discuss कर रहे थे कि gender, how that interacts with development. One of the outcomes that I'm looking at over here is education, and how the data set that I had of Pakistan sort of corroborates and fits nicely with the research जो कि हमने देखा. तो which I mean obviously I'm not going to make huge statements over here कि हाँ भाई ये this is the panacea, this is the you know pill जो आप दे दें तो सारा का सारा मसला हल हो जाएगा. However, you know the data that I saw indicated that you know you empower women, you can have better outcomes. Or I also looked at matlab other things which I can present somewhere else, sometime else, not where, over here definitely. Yeah, if you want more information you can read my paper जो कि आ रहा है, and the other resources, and thank you. I'm open to questions. Was I on time or do I still have time? Yeah, 6 minutes. Yeah, okay, no question and answers. Yes, sir. जो जिस तरह मतलब बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं इसमें फेमिनिज्म प्रैक्टिसेस हमारे को जिस तरह या वेट हो गया या वेट हो गया वुमेन एंड डेवलपमेंट वुमेन एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्योंकि जो डेवलपमेंट है ये क्वेश्चन ये किस तरह ये बताने की क्वेश्चन जेंडर एंड डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट जिस तरह मॉडर्नाइजेशन की
तो इसमें women की ट्रेडिशनल रोल है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड करते हैं इसको ट्रेडिशनल रोल है के हिस्ट्री में जो हमारी traditional society to roles, traditional society, yeah, and society. उस टाइम में डेवलपमेंट या मतलब वुमेन का रोल था वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा फर्स्ट होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट के जितनी भी एक्टिविटीज आ रहे हैं उसको मतलब साइड पे कर वो वुमेन को कितना वो पॉलिसी में डेवलपमेंट पॉलिसी में तो वो आपका सवाल ये है कि मेरा sort of theoretical framework क्या था जिसको इस्तेमाल करें और आपने और आपने रेफर किए कि बहुत से तरीके होते हैं उसको देखने के फॉर एग्जांपल women in development, women and development, gender and development and those are the different frameworks जिसकी मैं मतलब बात करती लेकिन मैं क्योंकि ज्यादा बात करती तो टाइम कम था women in development का लेकिन जो फ्रेमवर्क ये है empowerment का फ्रेमवर्क that comes in gender and development और उसका मतलब यही है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और ये ज़रूरी सवाल इसलिए है क्योंकि ये जो मतलब फील्ड ऑफ इंक्वायरी है जिसको हम जेंडर एंड डेवलपमेंट करते हैं इसका अपना भी एवोल्यूशन हुआ है और इसका एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि पहले बिल्कुल शुरू में जब हमने ये बात करना शुरू की मतलब डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स ने डेवलपमेंट रिसर्चर्स ने इकोनॉमिस्ट ने जब बात करना शुरू की कि भाई ये कहीं हमें गैप्स नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रॉबेबली women are being ignored तो they started looking at women कि उन्होंने देखा कि अच्छा women का क्या किरदार है कहाँ पे होती हैं उनके क्या मसाइल हैं this and that right over time which approach 1970s में आप कहते हैं कि ये शुरू हुई एस्थर बोजरप जो है she was an economist उसने पहले ये किताब लिखी women's role in economic development उससे ये स्टेम हुई और वो सारा कुछ इसी तरह देख रहे थे कि women का क्या है now over time इसमें इसी तरह की जो क्रिटिक है क्रिटिक कहाँ से आई क्रिटिक आई ग्लोबल साउथ से भी विच यू रेफर टू कि हमारे जो है अपना एक हिस्ट्री है हमारा जो है अपना एक कल्चर है हमारा जो है अपना मसाइल है जो कि रिलेटेड इस चीज़ से भी है कि आप ग्लोबल डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं डेवलपमेंट का आइडिया भी जो है वो एक मतलब जो सॉर्ट ऑफ काफ़ी एक इम्पीरियलिस्टिक आइडिया भी जिसको आप कह सकते हैं कि इट्स द डेवलपमेंट ऑफ सम कंट्रीज बट द अंडर डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्रीज एंड दैट इट्स ऑल्सो वेरी कि उसके अंदर अगर आप विमेन को बीच में मिला लेते हैं तो दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी प्रिस्क्रिप्टिव कि it's a very foreign idea. So that was one of the critiques of women in development, right? This was one of the critiques. The other critique was कि you're also not looking at women in relation to men, right? कि आप नहीं देख रहे हैं अगर आप इस माशरे को किसी भी माशरे को वहाँ farming systems देख रहे हैं वहाँ economies देख रहे हैं आप you're not looking at relations, you're not looking at culture, you're not looking at the power imbalances, and that led to a movement away from looking at taking the women in development perspective towards more the gender and development perspective. और gender and development का ये मतलब है कि you don't talk about women, you talk about gender. What that means is that you try and take into account the cultural context, you try and take into account the relations, you try and take a more holistic approach. And within gender and development there are different frameworks, and one of those frameworks is the empowerment framework that I took. और ये नाइला कबीर का है, who herself is an economist from Bangladesh, so she's very well aware of she's very conscious of the cultural specificities of South Asia. It's not I mean of course it has its drawbacks as well, however it still takes into account कि हर चीज़ को उसके relations में देखो. That is why जब मैं बात कर रही हूँ इस सारी चीज़ की तो मैं कह रही हूँ कि मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि which is not culturally very disputed in a sense कि I'm just talking about education. मैं बात कर रही हूँ और आई एम टेक अगेन मैं वुमेन को उनके बहुत एक कल्चरल रोल के अंदर देख रही हूँ विच इज़ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन हाउस होल्ड्स. दैट्स अगेन उसके ऊपर भी एक डिबेट हो सकती है कि भाई इस चीज़ का भी क्या मसला है कि मैं उसको इसी तरह से क्यों देख रही हूँ, बिकॉज दैट इज़ परहैप्स ऑल्सो कंटेस्टेबल, उसको भी शायद कंटेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं उसको उसी तरीके से देख रही हूँ, एंड दैट्स द फ्रेमवर्क दैट आई यूज़.
Maybe your question. जी सर. There's a question from Facebook, Sunil Nand. He asked that where patriarchy stands in defining gender, why women missing, what are the reasons? Okay, thank you very much. Where a patriarchy stands in Defining gender. okay. My answer would that would be, again, I'm not an expert. Please make a submission अगर किसी को इससे ज़्यादा command है तो. Patriarchy, loosely, I think is a system which means rule of the father. It means कि एक system है जिसके अंदर inequality of men और women की. Patriarchy contributes to like defining roles जो कि आदमी और औरतों के होते हैं, and that also morphs into inequality in a sense that you consider one of those genders as superior to the others. So and the other question was Why women missing? why missing women? Yeah, okay. So us missing women के अंदर जो है वो major contributing factors हैं the excess deaths of children, like girl children under the age of 5. This is the reason, and sex selective abortions, which mean कि पैदाइश से पहले ही जो है वो female fetus को जो है वो abort कर दिया जाता है. Women की death during the reproductive age because of childbirth, and the neglect of ill health of women over the age of 60. So the neglect जो health की होती है, that's not just at the level of infancy, but also at the older levels. Yes. एक आपने पहले खड़ा किया था. मैम आपने जो डेटा कलेक्ट किया है आपके लिए वापस सिर्फ उसमें एक डायमेंशन में दिख रहा है, एजुकेशन के डायमेंशन में और माइग्रेटेड और नॉन माइग्रेटेड के हिसाब से. लाइक डू यू प्लान टू एक्सपैंड द होराइजन ऑफ दिस रिसर्च बिकॉज़ यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन गैदरिंग डेटा. तो कोई और लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि हम इसको देखें सिंगल मदर हाउसहोल्ड में लड़की के स्टेज में जाके होती है. लाइक इस तरह की चीजें भी आप एक्सप्लोर करना चाहेंगी PIDE के थ्रू with a partnership or not? All right. Thank you very much. Thank you for the question. I'm going to take another question and then answer both of these questions. Time is over. Yes. Yes, of course you can. But let's talk about it after my presentation. But you can. Yeah. All right. Thank you very much. The first question, yes, of course, I've not just looked at migrant and non-migrant households. I've also looked at other households. And yes, I'm still working on things. So hopefully there will be other research on the same data set. Yes, you have questions. दो चीजें हैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ. हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं क्योंकि मैं जब करती हूँ यात्राबाद बलूचिस्तान से आता हूँ तो वहाँ मैंने मोस्ट प्रोबेबली जो अपने रिलेटिव और गाँव में कुछ देखिए फीमेल को डॉक्टर जाने के लिए जो मेल फीमेल है वहाँ डॉक्टर जाने के लिए उनको बहुत ज्यादा क्लास करना होता है. अगर जब वो लेके आ जाते हैं पिछले तो मोस्ट प्रोबेबली वो मैक्सिमम 2 या 3 बार जा सकते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है. अपने सास को और हस्बैंड को उनको दादे करना पड़ता है. ये दूसरा ये है कि शादी से जो पहले का टाइम है उसमें वहाँ पे उनको अलाउ नहीं होता है किसी भी इस तरह के गायनी डॉक्टर को विजिट करना. उन दो चीजों के इस तरह के फैक्टर्स को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं उनके साथ. Thank you for that question. One more question. Yes, please. Thank you. Ma'am, basically my question is that the post-colonial authors, if you see Chandra Mohanty, they criticized like homogenizing women of the East, basically the discursive inequality. But the thing is, when someone of your own area, let's say Pakistan, highlight those issues, the women those basically are facing, so rather than providing the solutions, they are sort of selling those ideas internationally, for what I believe. And it sort of incentivizes the West to produce more disposable, and then the gap increases, and we sort of capitalize
the whole gender issues. So this is like, how can we move away from it? Both of these are excellent questions. Really, I mean, these are very good questions. Your question, ke, yes, this is inability to access basic health services hai, that manifests in excess mortality, maternal mortality rates in Pakistan. और जब पाकिस्तान की आप देखिए उसमें भी बलूचिस्तान की आपको नजर आ रहा है कि वो बहुत बहुत ज्यादा राइट. और उस सारे के अंदर हम जब बात करते हैं तो दैट्स नॉट इस तरह नहीं है कि हम एक चीज से उसकी हल कर देंगे तो वो सारी की सारी जो है वो मसला उसका हल हो जाएगा. दैट इज वो मसला इसलिए है क्योंकि आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमी और आपका एक्सेस, all of that needs to change. I'm sorry, this is probably very pessimistic in a sense कि मैं ये नहीं कह सकती कि ये चीज तो ठीक हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा. हम मतलब मैं अगर बात करूं इस्लामाबाद की, मैं बात करूं मेरे मतलब सर्कल की which is still educated, which is still जिनको income wise भी access है, वहां पे भी अगर इतनी मुश्किल होती है बेसिक हेल्थ सर्विस एक्सेस करने की, तो वहां पे जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट रोड का मसला है, नर्स का मसला है और फिर साथ में इजाजत भी लेनी पड़े, उस मसले को अब कैसे हल किया जा सकता है? फ्रैंकली आई डोंट हैव एन आंसर. आई नो कि ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स हैं. I can only say is that try and research more because we also don't know so much कि वहाँ पे क्या जो है चीजें तब्दीली ला सकती हैं. जो मैं सक्सेस स्टोरी बता मतलब which I like to quote whenever I'm confronted with a question like this is that success story उन ममालिक की जहाँ पे जेंडर रिलेशन more or less हमारे से सिमिलर थे, और वो आपको ईस्ट एशिया की एग्जांपल मिलती है कि वहाँ पे भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे पहले आपको बहुत से रिलेशन इसी तरह के नजर आते थे जो कि आपको साउथ एशिया में नजर आते हैं, और उसमें तब्दीली बड़ी लेवल पे तब्दीली तब आई जबकि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स इंक्रीज होना शुरू हो गए. उसकी वजह से हाउस होल्ड्स में लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, और फिर वो एक साइकिल चल पड़ा कि मतलब नाउ वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग, व्हेन दे हैव इंडिपेंडेंट इनकम्स, देन दे कैन आल्सो से कि भाई हमें इजाजत की जरूरत ही नहीं है. दैट आल्सो देन रिलेट्स टू कि फिर स्टेट आपको क्या प्रोवाइड कर रही है और क्या नहीं कर रही है. Because households, like families, now this is not exactly my research. This is an opinion, so yeah, take it, like cautiously. कि जो families होती हैं हमारे यहाँ, why families क्या है? It's a support system. It's a social group. Why do we हम ये negotiate households के अंदर क्यों कर रहे होते हैं? Because हम resources share कर रहे होते हैं. Because हमारे support की जरूरत होती है. Because outside support हमारे पास है ही नहीं. मैं अगर अपने बाप से पूछती हूँ कि मैं बाहर जा सकती हूँ नहीं, और मुझे कहता है नहीं, तो मैं उसको नहीं कह सकती कि भाई ठीक है आपकी बात मैं नहीं मान रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं उसके घर में रहती हूँ, और अगर मैं उसका घर छोड़ दूंगी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा. इस्लामाबाद में भी कोई रेंट आउट नहीं करता खवातीन को घर, और अगर मैं अपना फैमिली को छोड़ दूंगी तो क्या स्टेट मुझे किसी किस्म की कोई सपोर्ट दे रही है? क्या मुझे सिक्योरिटी है, क्या मुझे सेफ्टी है, क्या मेरे पास जो है वो आउटसाइड ऑप्शंस है? So it's a problem that when you don't have an outside option, then you stay within those boundaries जो कि आपकी family draw करती है, and getting out of it perhaps needs like bigger changes that we observe in these industrialized countries. The second question, a very good question. Okay, are we contributing to this discourse that basically portrays women as like oh यहाँ पे ख़वातीन की बड़े मसाइल हैं, ये है वो है, and I'm not too proud of one of these pieces that I wrote for Jammu a while back, in which I said कि I think women in the global south can very much recognize both कि जो अमेरिका जब अफगानिस्तान पे अटैक करता है ये कह के कि हम औरतों को यहाँ पे जो है वो लिबरेट करने आए हैं, तो वो भी बुलशिट कर रहा होता है, लेकिन वी आल्सो वेरी मच रिकॉग्नाइज कि हमारी लोकल पेट्रियार्कीज भी एग्जिस्ट करती है, एंड दैट यस जस्ट बिकॉज कि हम लोकल पेट्रियार्कीज को जो है वो बुरा भला कहते हैं डजंट मीन कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि हाउ दैट डिस्कोर्स कैन आल्सो बी इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड for other purposes, and it has been instrumentalized.
But again, just because हम उसको what we can try and do is that, be more cognizant, be more aware, be more vocal. But that still does not mean कि हमारे mistake exist नहीं करते, हमारे mistake exist करते हैं. अब उसको अगर कोई इंस्ट्रूमेंटलाइज कर रहा है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो कि नहीं भाई ये ना कहो, या वो हम कहते हैं ना कि तुम नहीं कह सकते हम कह सकते हैं ये बात, तो बेहतर होगा कि गोरे आके हमें ये मत बताएं कि हमारे ये मसाइल है, तो हम खुद ही इसको जो है वो आपस में डिस्कस कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा. अगेन दिस वाज एन ओपिनियन, दिस वाज नॉट like I don't know, this is not scientific. Thank you. Mother child 5 to 6 year old that is yes please sorry I that is a very important point and that is a good point. और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप systems की बात करते हैं तो the individual उसकी जरूरी नहीं है कि ये जो अगर आपको एक निजाम नजर आ रहा है तो उसको प्रमोट सिर्फ जो है वो एक आदमी ही कर पाएगा, और उसके अंदर इट्स अ माइंडसेट ना, इट्स जो पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स होते हैं वो खाली आदमियों के नहीं होते हैं, वो औरतों के भी होते हैं. और उसको जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो आपको नजर आता है कि उसकी वजूहात क्या है. नाउ एज अ वुमन उसकी पोजीशन विद इन द हाउस होल्ड क्या है, अगर उसकी सिर्फ बेटियां होंगी, और उसकी अपनी पोजीशन विद इन द हाउस होल्ड क्या है जब उसका बेटा होगा. Right? So that's perhaps a bargain that she's making. कि उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं except कि वो अपने आप को सिर्फ इस तरह से as an individual by giving birth to sons or by having sons around जो कि उसका support system होंगे. That is also that's very important. अगर आप थोड़ा सा ये चीज इंक्लूड करें मिशन का रूप में है तो उसकी थ्योरी है ना वो स्ट्रक्चर इसमें कर सकते हो उसमें डिस्कोर्स जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं पॉसिबल बस ये है आप उसको चाहे तो अगर हम फिर से स्टार्ट करें तो Excuse me, time's up now, so we are going to finish it. No more questions, please. अगर हम इसमें थोड़ा सा उसको कर ले तो Thank you. That's an excellent point. But moderator has something to say. So time is always a constraint, and we are sorry that time's up now. And thank you very much to all of you for joining. And it was a wonderful conversation with Dr. Sundus. And thank you so much, ma'am, for joining us and for sharing your insights. Thank you for your time. Thank you.